Hello dear students, how are you? Today we will discuss worksheet number 36, class 10th science, metals and non-metals. Some important questions discuss कर लेते हैं. Objective type question है. Number 1, an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be calcium. The answer is A. Metal oxides are basic in nature. B है आंसर. The non-metals which can conduct electricity is graphite. Arrange copper, sulfur and aluminium in increasing order of reactivity. Increasing में करनी है तो silver, copper and aluminium. Increasing में silver, copper and aluminium. 5. A list of common metals arranged in order of their decreasing reactivity is known by what name? Reactivity series of metal. 6 है a dash reactive metal displays a dash reactive metal from its salt solution. A more reactive metal displays a less आ जाएगा more और less. Name the ion made by non-metals. Anions. Non-metals always make anions. Some metals do not react with water at all. Name any one. So you can write gold, Au. Metal which is the most abundant in Earth's crust is aluminium. The answer is B. The electronic configuration of an element E is 286. Will it lose 6 electrons or gain 2? It will gain 2 electrons because it will be easy to gain 2 than to lose 6. So it will gain 2 electron. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम देख लेते हैं. Fe प्लस H2O इसको हमने कंप्लीट करना है तो ये आ जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2 बैलेंस कर लेंगे हम और इसका आंसर आ जाएगा Ca प्लस 2H2O इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 2K प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2KOH प्लस H2 बैलेंस भी कर लेंगे हम साथ साथ. Generally when metals are treated with mineral acids, hydrogen gas is liberated, but when metal except manganese and magnesium treated with dilute HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, hydrogen is not liberated. Why? Because HNO3 is highly oxidizing agent. जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसको ये ऑक्सीडाइज कर लेता है. So nitric acid oxidize hydrogen gas that is liberated, and instead of hydrogen gas many times nitrogen dioxide is liberated when it reacts with metals. Hydrogen gas is not liberated. You are given a hammer, a battery, a bulb, wires and a switch. How could you use them to distinguish between sample of metal and non-metals? So we will arrange बैटरी, बल्ब और वायर्स को इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि हम देख लेंगे कि वेदर द मेटल इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. गिवन सैंपल अगर कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को देन इट विल बी अ मेटल, अदरवाइज इट विल बी नॉन मेटल. एंड विद द हेल्प ऑफ हैमर वी कैन सी वेदर इट इज अ सोनरस और नॉट. Assess the usefulness of these tests in distinguishing between metal and non-metal. It will be very useful because with the help of hammer we can find whether it is a sonorous or not sonorous. If sonorous, then it is a metal, and if it is a good conductor of electricity, then it is a metal. With the help of battery, bulb, wires, we can make a circuit, and we will use this for knowing whether it is a metal or non-metal. What are amphoteric oxides? Amphoteric oxides react with acids and bases both and give salt and water. Two examples are zinc oxide and aluminum oxide. Question number 5. Give reason. Copper is used to make hot water tanks and not steel because copper is less reactive and good conductor of heat and does not react with hot water.
Gold and silver are used to make jewelry because both are shiny, lustrous, and do not react with water and oxygen, do not corrode easily. Sodium, potassium, and lithium are stored under oil because they react vigorously with oxygen and moisture and catch fire. So they are kept in kerosene oil or any other mineral oil. Metallic oxide of zinc, magnesium, and copper were heated with the following metal. In which case you will find displacement reaction taking place in question number 6. जिंक ऑक्साइड है तो जिंक में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक. कॉपर के साथ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेंगे तो इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि मैग्नीशियम ऑलरेडी वेरी रिएक्टिव मेटल है. कॉपर ऑक्साइड है तो जिंक भी डिस्प्लेस कर देगा इसको और मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस कर देगा. कॉपर के साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 7. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज़ द मोस्ट मेलेबल, दैट इज गोल्ड Au. द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट दैट इज सिल्वर यानी Ag. नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट. तो आप किसी भी एल्कली मेटल को ले सकते हैं. बहुत सारी मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में नहीं आती. सोडियम लिख सकते हैं. विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रेट डिमांड इन इंडस्ट्री, बिकॉज it is a non-reactive metal and highly malleable, and thin sheets can be made and does not corrode easily. That's why it is used in packing food items also. 9. One metal X is treated with cold water. It gives a basic salt with molecular formula XOH and liberated a gas jet which easily catches fire. Identify X, Y and Z. So X can be sodium, potassium or lithium because only these three metals react with cold water. तो सोडियम हमने मान लिया है इधर. X is sodium. It gives a basic salt with molecular formula XOH. So NaOH बन जाएगा. जब Na हमने X को ले लिया तो XOH क्या बन जाएगा? NaOH. And liberated a gas Z. तो जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी क्योंकि हाइड्रोजन गैस इजीली कैच फायर कर लेती है. इजीली कैचेस द फायर. सो X is Na, Y is NaOH and Z is hydrogen. Question number 10. In the given structure, write chemical formula. N2O. मेटल और नॉन मेटल. सोडियम मेटल है और नॉन मेटल ऑक्सीजन हो गई. एनायन है ऑक्सीजन और केटायन है सोडियम. Na प्लस ऑक्सीजन हो गई O-2. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं. इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड बिटवीन टू एटम्स A and B, R loses 2 electrons and B gains 1 electron. What is the nature of bond between A and B? आयनिक बॉन्ड बनेगा. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड्स. Suggest the formula of the compound A and B. A and B, A loses 2 electron and B gains 1 electron. So AB2 will be the, क्योंकि B के 2 हैं, A का 1 है. ठीक है, तो AB2 आ गया इसका आंसर. On similar line, explain the formation of MgCl2. तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, दे रहा है, और क्लोरीन का एक एक एटम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है. इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट यानी आयनिक बॉन्ड बन गया है. कॉमन सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन द मोल्टन स्टेट. वाई? बिकॉज आयंस मूव फ्रीली ओनली इन द मोल्टन स्टेट और इन अ वाटर सॉल्यूशन. सो दैट इज द रीज़न when common salt is in a solid form, so ions do not move, and if they do not move, they do not conduct electricity. So in the molten state, ions move freely. They move toward the opposite electrodes and conduct
electricity. Why is melting point of NaCl high? NaCl is an ionic compound and it needs a lot of energy to break an ionic bond. So NaCl has high melting point. Differentiate between metals and non-metals on the basis of following properties: ductility, malleability, density, appearance, and electrical conductivity. So metals are ductile and non-metals are non-ductile, means wire can be made from the metals. Malleability means metals can be beaten into thin sheets. So metals are malleable and non-metals are not malleable. Density, most of the metals are very dense except of lithium. Appearance, most of the metals are lustrous, shiny, and non-metals are not lustrous, shiny except iodine. Electrical conductivity, most of the metal conduct electricity and non-metals do not conduct electricity except graphite. Graphite is a non-metal but conduct electricity. What is aquaresia? Aquaresia is a mixture of HCl and HNO3 nitric acid in the ratio of 3 and 1. It can dissolve even gold. Write short note on reaction of metal with salt solution. When metal react with any salt solution, then if metal is reactive, then it displays other metal, means more reactive metal displays less reactive metal from its salt. You can see here example, iron displays copper from copper sulfate solution.